done. So the second is why. So why means the purpose of learn this chapter. The purpose. So why should I learn this chapter? Why should this chapter have invented? So in this question we will learn why. Why means why should I learn this chapter? Why our universities have included this chapter in our syllabus? So for that purpose, so at first we'll try to learn the particular topic. Why should we read this chapter? Why should we learn how to control inventory? Okay. So here you can see I have written that line, that is reason to follow inventory management. So why should I follow the reason? So the reason, so the first reason is it helps in smoothing and efficient running of an enterprise during current production process. So इनसे हमको क्या, ये चीज़ हम क्या बोलना चाहते हैं कि हम इसको पहले तो ये है हम इसको फॉलो क्यों करें, तो फॉलो करने की जो पर्पज़ है वो इधर लिखा हुआ है कि इट हेल्प्स इन स्मूथिंग एंड एफिशिएंट रनिंग ऑफ एन एंटरप्राइज. अगर हमारा बिजनेस एंटिटी एक मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी, इन शॉर्ट, अगर हमारा बिजनेस का मोटो क्या है, अगर हमारा बिजनेस एंटिटी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसको क्या चाहिए, उसका स्मूथिंग एंड एफिशिएंट रनिंग ऑफ एन एंटरप्राइज ड्यूरिंग करेंट प्रोडक्शन प्रोसेस. सो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है इसका काम क्या है, इसका काम है प्रोडक्शन करना. सो ये प्रोडक्शन काम पे जो कोई खेद ना आए, ये प्रोडक्शन काम अगर कांस्टेंट वैसे चलता रहेगा तभी इनका ग्रोथ होगा. अगर इसका चलने की ओए में कभी भी कोई खेद आया, कभी भी कोई ब्रेक डाउन आया, तो इसका फ्यूचर ज़्यादा जल्दी ऊपर नहीं जाएगा. तो ब्रेक नहीं आना चाहिए, और ब्रेक ना आने के लिए हमको ये इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम पढ़ना होगा. सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न टू स्टडी इन्वेंट्री कंट्रोल. द नेक्स्ट वन इज़ it provides service. It provides service to customer at a short notice. Timely deliveries can fetch more goodwill or orders. If the customers want to get their deliveries in short time, then it will manage to place the service to the customer in a proper way. अगर एक ऐसी सिचुएशन आ गया, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया कि कंपनी जो हमारा बिजनेस एंटिटी है उसके हाथ में टाइम बहुत कम है, और जो कस्टमर से जो ऑर्डर आया है, कस्टमर के तरफ से जो ऑर्डर आए हैं वो हमको डिलीवर करना पड़ेगा बहुत ही कम समय पे. सो हमारे हाथ में बहुत कम टाइम है और हमको वो ऑर्डर डिलीवर करना होगा बहुत ही कम समय पे. तो तब हमको ये इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम का फॉलो करना चाहिए. सो दिस मेथड विल सर्व to our customer in a greatest way, so that will increase our goodwill and our quantity of orders. Okay. So the third one, in the third one we can see it's right down here like that. It acts as a buffer stock. It acts like a buffer stock. So I would like to underline that particular word. So that is, it acts as a buffer stock when raw materials are received late and shop rejection are too many. So what is buffer stock? What does it mean buffer stock? Buffer stock means it's we can see that this buffer stock mean the reserve. When we used to buy this raw material and store that in our godown, when we store our raw material in our godown, then our store requisitor is to keep some raw material in a secret place where these raw materials is to store. If any emergency situation arise during any emergency pandemic, like now,
in India, in not only India, in whole world, the COVID pandemic situation have arise here. So at this situation, the transportation system have closed. So what can you say? What can we do? So if the transportation system is closed, properly closed, then there will be no import export. There will be no import export. There will be no inter or intrastate transfer. So at that point, so what it will be, um, the process, if we kept some food, if we kept some crops, if we kept some raw materials in our stock in a secret way, then at the time of that, it becomes very useful to this emergency situation. तो इसका इसका मतलब क्या है कि अगर एक ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो जाए जबकि हमारे पास रॉ मटेरियल बहुत देर से आए हैं, कि हमने हमने अगर बोले थे कि हमको 1 मार्च 2021 में हमारा रॉ मटेरियल चाहिए, और जो जो हमारा सप्लायर है, जो हमको रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, वो हम 1 मार्च को नहीं कर पाए, उसके बदले में वो हमको 5 मार्च पे सप्लाई किए हैं. फॉर दिस डिलेइंग सेशन, 4 दिन की इधर 4 दिन बाद हमको हमारा रॉ मटेरियल मिला है. तो इसके फॉर दिस पर्पस आवर प्रोडक्शन सिस्टम विल ऑल्सो डिले. सो 4 दिन बाद अगर हमको प्रोडक्ट मिले हैं, इसका मतलब कि हमारा जो गुड्स तैयार होंगे, जो हमारा प्रोडक्ट तैयार होंगे, वो भी 4 दिन बाद ही, जिस दिन पे होना चाहिए था उनसे 4 दिन बाद ही वो प्रोडक्ट तैयार होंगे. सो फॉर दैट पर्पस व्हाट शुड बी द मोस्ट यूजफुल जॉब. सो अगर हमारे रिजर्व में कुछ रिजर्व, अगर हमारे रिजर्व एक सीक्रेट केव, इसको कहते हैं हम सीक्रेट केव, अगर हमारे ये सीक्रेट केव में अगर हम कुछ रॉ मटेरियल पहले से जोड़ के उधर अगर हम स्टॉक करते रहते थे, तो आज अगर ये परेशानी भी आ जाते थे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता. सो इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम लर्न अस, सो वी शुड ऑलवेज कीप सम प्रोडक्ट, कीप सम गुड्स, कीप सम रॉ मटेरियल इन आवर स्टॉक. सो अगर हम इसको स्टॉक करते रहेंगे तो इसी को कहते हैं बफर स्टॉक. अगर हम ऐसे ही स्टॉक करते रहेंगे तो कोई भी अगर सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन अगर हमारे पास आ जाएंगे, तब हम उसको संभाल लेंगे. सो इट विल हेल्प you to not to deliver your product, not to deliver your product to customer in not a proper way, so there will be no rejection. So if that's method, if you not follow that method, then there will be so many soft rejection from customer. Okay, so the fourth point you can see that's written like that: bulk purchases will entails less order and therefore less clerical cost. This applies to goods produced within the organization as well. Less order as a result of larger lots will entail lesser machine setup and other associated cost. So bulk purchase मतलब बहुत क्वांटिटी में, बल्क परचेस मतलब बहुत क्वांटिटी. सो अगर हम एक बहुत भारी क्वांटिटी की परचेस करें, भारी क्वांटिटी में अगर रॉ मटेरियल परचेस करें, तो इट विल एंटेल्स लेस ऑर्डर. अगर हम एक बार में बहुत सारा रॉ मटेरियल खरीद ले तो हमको ज़्यादा बार ऑर्डर करना नहीं पड़ेगा. हम बहुत कम टाइम ऑर्डर करेंगे और एक ऑर्डर में बहुत huge quantity of raw material will buy, so that will less or clerical cost. so unloading, loading, इसके लिए जो मजदूर जाते हैं उधर, तो इसके लिए जो ये जो clerical cost है, wages, the loading unloading cost, so that will be reduced. so this applies to goods
produced within the organization as well, and less order as a result of larger lots. So एक लॉट पे हमारा बहुत सारा रॉ मटेरियल हमारे पास आ जाएंगे, तो रॉ मटेरियल की जो अवेलेबिलिटी है वो हमारे पास बहुत सारे होंगे, तो हमको कोई इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है. सो विल एंटल लेजर मशीन सेटअप एंड अदर एसोसिएटेड कॉस्ट. सो अगर हमारे पास बहुत सारा रॉ मटेरियल एक ही बार में होंगे, तो हमारे पास क्या क्या होगा कि हमारा जो मशीन सेटअप कॉस्ट है और एसोसिएटेड कॉस्ट, दैट्स मीन मशीन सेटअप कॉस्ट एंड एसोसिएटेड कॉस्ट, इसका एक और नाम है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर. कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर. सो इसका जो खर्चा है, जो हमारा रॉ मटेरियल को हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और हमारे जो फैक्ट्री है उधर लाने के लिए जितना खर्चा है, उधर लाने के बाद उनको प्रोसेस करने में जितना खर्चा है, तो वो सारा खर्चा हमारे इधर और होंगे, लेकिन बहुत कम होंगे. सो दिस इज द पर्पस टू फॉलो आवर inventory management system. If you guys want to write it down, the previous definition or explanation, then you will pause the video and write it down in your register. Okay, so this is the why purpose and the what purpose I've already discussed. So now I will explain some more about the classification of inventories. So you can see there are two kind of inventories, that is direct inventories and indirect inventories. Direct inventories and indirect inventories. So the first one is, you can see, that is production inventory. So what does it mean, the production inventory? So here you can see the number one, that is production inventory. Production inventory की मतलब क्या है? So I am writing it down in short list way. So production inventory means materials, components which used to produce final product, final product. Okay, so materials component which used to produce final product. So these are production inventory. The next one is work in progress inventory. So what does it mean, work in progress inventory? So I'm writing down, it's here in bracket. So it means semi finished goods. Semi-finished goods. It means semi-finished goods or product. Semi-finished goods or product at different stage. Product at different stage of production. Okay, so it means semi-finished goods और प्रोडक्ट एट डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन. इसका मतलब कि जो रॉ मटेरियल हम एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो रॉ मटेरियल अगर पूरा नहीं बने, उसके बीच में अगर वो रॉ मटेरियल को बनाना छोड़ दे, और वो जो टाइम है, वो जो प्रोडक्ट जो आधा तैयार हुआ एक जो प्रोडक्ट है, उसको हम कहेंगे सेमी फिनिश्ड गुड्स, और इन्वेंट्री के लैंग्वेज में हम इसको बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री. ओके, and the third one is, that is finished goods inventory. That is finished goods inventory. Finished goods mean the product we want to make from the raw material, the purpose to running out our business. So हम जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, जिसको हम तैयार करना चाहते हैं और उसको मार्केट में बेचना चाहते हैं, वो है फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री. इसके बाद आता है स्पेयर पार्ट्स. स्पेयर पार्ट्स मीन द पार्ट्स ऑफ मशीनरी, car which are really used to in our production system,
and other products like scrap, obsolete, and unusable product, so which arise after completing the production system. So there are some scrap of raw materials, obsolete and unusable product, which is to occur during the production system, and that's have no value in real market. So this kind of products are other products, so it is also a part of our direct inventories. And the next one is indirect inventories. So number one is transit or pipeline inventories. So that's really have a very funny name. So ट्रांसपोर्ट इन्वेंट्रीज का एक एग्जांपल हम लेंगे, जो है मूवमेंट इन्वेंट्रीज हम इधर लिखते हैं इसको मूवमेंट इन्वेंट्रीज मीन्स movement inventories. That means like coal, fuel. So these are all movement inventories, क्योंकि इन सारे इन्वेंटरीज को एक जगह से दूसरा जगह लेके जाना पड़ता है. बफर इन्वेंटरीज. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द बफर स्टॉक. सो बफर इन्वेंटरीज के बारे में उतना हम और एक again I really do not want to explain more because this video will make with a huge time consumption, so I would not like to explain again. So बफर स्टॉक का एक ही पर्पज़ है कि हमारा इमरजेंसी सिचुएशन पे हमारे हाथ में कुछ स्टॉक अगर होंगे तो वो स्टॉक से हम काम चला लेंगे. सो फॉर द इमरजेंसी सिचुएशन दैट काइंड ऑफ इन्वेंटरीज आर रियली नीडेड. एंड there is nothing to learn more on that direct and indirect inventories, because from this chapter you will get practical sum. So I have studied this chapter properly, so I think as much as I can I will try to give you the the maximum type of theories part. So these are the theory part, otherwise the practical sums are will come in question from this chapter. So here you can see decoupling inventories, seasonal inventories, and anticipation inventories. Oh, sorry guys, if you guys want to get an extreme chapter wise PDF, so I will send you that. So if you need that, then go to the description box and ask me for so there will be some numbers are given. So some number, there will be one number given which is my WhatsApp number. You can inbox me, ask me for the PDF of operation research for chapter wise. So I will send you. So there will be all about inventories will be there, and some and few problems will be there. So I will send you. So there will be no need to worry about your concept. If you want to gain more concept in details with this inventories type, so I will give you the whole chapter PDF from a particular book. I have so many soft copies of book, so I will send you guys in step by step with my next proper videos when come. So if you need to understand this particular form of terms, so you can ask me, I will send you guys. Okay, so the classification part have cleared here, and the last one, that is inventory cost. So what kind of cost, inventory cost, are given in our topic? So so it's saying that the four types of cost considered in inventory cost control models. Four kind of inventory cost four type of cost considered in inventory cost control models. So what are these costs? That is purchase cost, the second one is inventory carrying cost, and the third one is procurement cost and the shortage cost. So procurement cost, there are another name, that is setup cost, or there are another name which we use in our real life, that is ordering cost of
cost of place an order. So here it is, guys. So that's all for today's video. So there is nothing to discuss more on that particular chapter. So this is enough theory I have discussed today's video. So if you guys want to take uh, the screenshot, so you can took the screenshot and write down this all theories portion in your copy. And otherwise, if you want to get the PDF, so then tell me in my WhatsApp number, the WhatsApp number given in my description box. So go there and ask me, I will send you. No hesitation, guys. So in today's video I have already discussed what is inventory and inventory uh, control, and why is inventory control. So why should I study this particular topic? So in this next video we will discuss about how. So how is inventory control. So before to know about the policies, the models, there are so many things to discuss with you guys. So we'll get back in the next video with this particular topic. So thank you guys, thank you for being a patient here, or we'll meet in our next video with the second part of this introduction chapter. Thank you so much.